ब्रोंकियोलाइटिस ब्रोंकियोलाइटिस, सांस भी हो रही है टाइट टाइट टाइट, बेब इज ब्रीथिंग फास्ट इज ब्रीथिंग, पेरेंट्स गेटिंग फ्राइट, बीस कफ कफ कफ, ऑक्सीजन चेक करो, एंटीबायोटिक हर बार नहीं, सपोर्टिव केयर इज बेस्ट। पहले रनी नोज फिर कफ का अटैक, 2-3 दिन में ब्रीथिंग स्टार्ट्स गोइंग फास्ट, नोज ब्लॉक्ड है बेबी फीड न खाए, हर ब्रीथ के साथ चेस्ट अंदर जाए, टैकिपनिया देखो, रेस्पिरेटरी रेट देखो, रिट्रैक्शन दिखे तो डोंट वेट, दैट्स द पॉइंट, प्लीज हो सकता है क्रैकल्स भी आए, क्लिनिकल पिक्चर डायग्नोसिस बनाए, यूजुअली वायरल इन्फेक्शन का काम, RSV फेमस बट वायरस इज में नेम, फीवर हो सकता है बट नॉट ऑलवेज हाई, कफ और कंजेशन सिम्टम्स मल्टीप्लाई, वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी काम नहीं करे, बिना इंडिकेशन के प्रिस्क्रिप्शन से क्या फायदा, डायग्नोसिस क्लिनिकल हिस्ट्री प्लस एग्जामिनेशन, रूटीन टेस्ट हर बार बेबी में नॉट द प्लान, ब्रेस्टिंग फास्ट हो तो फीडिंग गेट्स हार्ड, बेबी थक जाता दैट्स अ डेंजर कार्ड, नोज ब्लॉक्ड है सक करना टफ, हाफ फीड्स बेबी सेज दैट्स इनफ, वेट डायपर्स देखो, हाइड्रेशन एसेस करो, इनटेक आउटपुट का प्रॉपर ट्रैक करो, पुअर हाइड्रेटिंग डिहाइड्रेशन, लिथार्जी आए, एडमिशन का थ्रेशोल्ड लो हो जाए, पल्स ऑक्सीमीटर लगाओ, सैचुरेशन देखो, बेबी की क्लिनिकल कंडीशन भी साथ में देखो, लो ऑक्सीजन परसिस्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करो, टारगेट और लोकल प्रोटोकॉल फॉलो करो, नेजल ब्रोंक्स ऑक्सीजन एज क्लिनिकली रिक्वायर्ड, एस्केलेट द सपोर्ट व्हेन द बेबी इज टायर्ड, grunting, apnea, exhaustion inside, senior help bulam, don't delay the fight, chest recession, nasal flare, breathing so fast baby becomes exhausted, that's the red flag, apnea episodes, cyanosis appear, silent chest, that's a serious, don't ignore altered sensorium, SSE one more, CO2 retention, fatigue inside, respiratory support, doctor antibiotic not routinely required, steroid दे तो not routinely required, salbutamol चलाओ not routinely required, bronchiolitis treatment is supportive mainly, no saline injection when needed, hydration maintain oxygen if indicated, don't chase every wish with a nap and the run, treat the baby not just the number that it's done, first episode of wish and think is twice, history and examination that's how you are advised, recurrent wish asthma enters the chart, foreign body consider history is the same, baby is feeding better.